शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तू अजन्मा, तू निष्कामी, त्रिकालदर्शी, सबका स्वामी। तू विदेही, तू निराकार, तू करता भवसागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है।
का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती, हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए, बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए, वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर, है तेरा घर शांति का दर। जो तुझसे लगन लगाए, वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए, वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। ओम शांति। आज बाबा की मुरली हम सुनेंगे। Today we will listen to Baba's बाबा Murli. ने कहा, Especially मंजिल कौन सी है? Baba says, what is your destination? मंजिल की याद दिलाई है। Baba has reminded us about our destination. We have to claim the happiness from all his relationship. दूसरा बाबा ने कहा, मैं उस्ताद हूँ, And secondly, Baba says, पकड़ लो, I am the master. सब कुछ मिल You hold my hand and you will get everything. छोड़ना। You shouldn't leave the hand of the Father. बीमारी आएगी, टांग टूटेगी, Illness will come, धनी the चलेगा, leg will be broken. लेकिन No matter what happens, हाथ ना छूटे। should never leave the hand of the Father. तीसरा बाबा ने ये भी कहा, And thirdly, Baba also says, as what is called as elevated action. लेकिन The worldly people do many social services, but what is called the elevated effort? क्यों? We have to donate the jewels of knowledge. लोगों का जीवन अच्छा बनता है। Through donating the jewels of knowledge, people will be benefited. They will become prosperous.
for 21 births. आज 2 मुरली हैं। Today we are having 2 Murlis. मीठे बच्चे Baba says, sweet children, से सर्व संबंधों का सुख लेना है in order to claim the happiness तो of having all relationships with the Father, you have to remove your loving intellects yoga यही away from everyone else and constantly remember me, your Father alone. This is the highest destination. इस समय Question: कौन सा अच्छा कर्म करते हो what good acts do you children perform रिटर्न में at this time, कार बन in return for which you become wealthy? उत्तर Answer: सबसे अच्छे से अच्छा कर्म the best act of all is ज्ञान रत्नों का दान करना। to donate the jewels of knowledge. ये अविनाशी ज्ञान खजाना This imperishable treasure of knowledge 21 will be जन्मों के transferred लिए विनाशी धन and become perishable wealth for your future 21 births. माला माल बन जाते You become prosperous जो through जितना this ज्ञान रत्नों को धारण कर to the extent that you imbibe the jewels of knowledge उतना and inspire others to imbibe them. You will accordingly become अविनाशी wealthy. ज्ञान रत्नों का दान करना To donate the imperishable jewels of knowledge सेवा is the most elevated service. शांति। Om Shanti. शिव बाबा अपने सालीग्राम बच्चों को समझाते हैं Shiv Baba explains to his Saligram children, अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान this knowledge is given to souls, आत्मा children of the आत्मा Supreme को ज्ञान Father. नहीं देती A soul cannot give knowledge to a soul. परमात्मा शिव बैठ Only the Supreme Soul, Shiva, sits here तुम लकी स्टार्स and gives knowledge to Brahma, Saraswati and you children, the lucky stars. इसलिए इसको परमात्म ज्ञान कहा जाता है That is why this is called godly knowledge. परमात्मा तो एक है God is only one. बाकी क्रिएशन है क्रिएटर Everyone else is a creation of the Creator. लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि ये सब हमारे A physical father would not say that all of these are forms of himself. रचना है No, he would say that all his children are his ये creation. रूहानी बाप है So this one is the spiritual father, मिला हुआ है the one who has received the part. मुख्य एक्टर He is the principal actor, creator डायरेक्टर है and director. बाबा का पार्ट मुख्य एक्टर Shiv Baba's part is principal actor, creator and director. परमात्मा के लिए कहा जाता A soul cannot be called the creator. है तुम्हारी गत It is said of the Supreme Soul, only you know your ways and means. सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग मत है All of those gurus have their own different opinions, परमात्मा आकर एक मत देते हैं and this is why the Supreme Soul comes and gives one direction. वो तो मोस्ट बिलवेड है He is the most beloved. उसके साथ बुद्धि योग लगाना है You have to connect your intellect's yoga to that one. जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है हाँ, लौकिक में बाबा कहते हैं जिनके साथ प्रीत है वो सब In a Laukik way, worldly way, those you love are the ones who deceive you. इसलिए उन This is सब why से बुद्धि निकालनी है you have to remove your intellects away from all of them. मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा I will give you the happiness of all relationships.
Simply remember me. ये है मंजिल। This is the destination. मैं सबका डियरेस्ट डैड, प्यारा पिता भी हूँ। I am everyone's dearest dad, lovely teacher, and guru too. तुम समझते हो उन द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। You understand that you receive liberation in life यही from him. अविनाशी ज्ञान खजाना है। These are imperishable jewels of knowledge. विशेषता बाबा बताते हैं, ये खजाना Baba is explaining about the speciality of the treasures. विनाशी धन बन These treasures will be transferred and become perishable wealth for your future 21 births. माला माल हो जाते हैं। We become very prosperous for 21 राजाओं births. का भी राजा बनते हैं। We become kings of kings. तो क्या करना चाहिए? And therefore, what we have to do? अविनाशी धन का दान करना है। Donate this imperishable wealth. पहले लौकिक लाइफ में क्या करते थे? What we were doing in the अविनाशी धन Laukik life, दान, we used to donate perishable wealth. काल का क्षण भंगुर सुख, Previously, you used to donate perishable wealth and you thereby received temporary, momentary happiness in your next birth. पुण्य किया है, जिनका फल मिला है। It is said you have received the fruit of what you donated and of the charity you performed in your past birth. लौकिक में हम जब करते थे थोड़ा मिलता था, एक In a worldly way, when we have to do, जन्म we would do for one birth. तो नहीं कहेंगे, It would not be called as the reward for birth after birth. करेंगे। You receive that fruit for only one birth. हमको It cannot be said that that is a reward for many births. जन्म जन्मान Whatever we do now, we will receive the reward of that for birth after birth. Therefore, this is now a deal for many births. बेहद का वर्षा लेना है। You have to claim your unlimited inheritance अच्छा कर्म, from the Supreme Soul. अविनाशी The best act is to खजाना donate the imperishable treasure of knowledge. जितना धारण कर औरों को कराएंगे, To the extent that you imbibe the jewels of knowledge and inspire others to imbibe them, औरों को भी बनाएंगे। you will accordingly become सभी wealthy साहूकार हैं, and you will also make others wealthy. इसका मतलब ज्ञान खजाना दान करते, औरों को भी बनाएंगे। Your wealthy means you donate the imperishable jewels of knowledge and you also make others wealthy. सबको देना, बाबा का ज्ञान देना सभी को, To give Baba's knowledge to everyone, this is the most elevated service to do. It is through this that you receive salvation. साहूकार भी बनते हैं। You become prosperous, देवताओं की you become wealthy. कैसे संपूर्ण, निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, Just see the system of deities. संपूर्ण They are completely voiceless में ही रहे। and follow the highest religion of non-violence. बहिष्ठ में रहने वाले, Only in the golden and silver ages is there total purification, complete purity. Deities reside in paradise. वही संपूर्ण। They are remembered as being the most elevated. फिर Those who go into the Sun dynasty of the golden age are perfect beings. अब तुम समझते Later, a little alloy becomes mixed in them. बहिष्ठ के निवासी, You now understand what paradise is बैंकुंठ, and where the deities live. वंडरफुल दुनिया, Vaikunt paradise is a wonderful world. वाले तो जा ही नहीं सकते। Those of other religions are not able to go there. ये सब धर्मों को रचने वाला ऊंच ते ऊंच भगवत,
God the highest on high is the creator for all the religions. ये तो कहते हैं Brahma didn't establish this deity religion. मेरे में ज्ञान कहाँ से आया? Brahma says, I was impure, प्योर सोल्स ऊपर से आए so how did I receive this knowledge? और यहाँ All of those pure souls came from up above to establish their own religions. जब इसमें Whereas the Supreme Soul Himself has come here to establish this religion. कहा जाता है When He enters this one, He names Him Brahma. It is said, salutations to the deity Brahma, salutations to the deity Vishnu. से मनुष्य सृष्टि So, the question now arises, was the human world created through those deities? जिस No. साधारण तन में आता हूँ The Supreme Soul says, ब्रह्मा है। I give the name Brahma to the one whose ordinary body I enter. सूक्ष्म That one is the और यहाँ भी ब्रह्मा है subtle Brahma. हो गए And so there are नाम two Brahmas. This one has been named Brahma क्योंकि कहते हैं मैं साधारण तन में आता because it is said that God comes in an ordinary body. मुख कमल से ब्राह्मण रचता हूँ I create Brahmins through the lotus lips of Brahma. आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई Humanity is created through the one called Adidev. फिर वृद्धि हो So this one is the first Baba of humanity. ह्यूमैनिटी का पहला बाबा First Baba of humanity. अब तुमको राजाओं का राजा Then expansion takes place. कौन सी धारणा चाहिए You are now being made into kings of kings. However, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता only when you break away from your bodies and all your bodily relations will you become those. You will become the king of kings. संबंधों से नाता Only when you break away from your bodies and all your bodily relations will you become those. Baba, I belong to you alone. सो प्रिंस बनते हैं You have the faith that you are becoming सीखते हैं princes. राजा बनने के Why are we learning Raj Yoga? To become kings. लिए है सब देह और देह के सब Inculcation is तोड़ना you have to break away from your हमारा ही bodies and all your bodily relations. Baba, I belong to you alone. बनते हैं You have the faith that you are becoming princes. होता है You have visions of the one with 4 arms. चित्रों में ब्रह्मा को 10 That is an image of a couple. भक्ति की In those pictures, काली को तो कितनी Brahma has been portrayed with 10 to 20 arms. बाहों वाली चीज Kali too has been shown with many arms. ये सब अस्त्र There cannot be anyone with so many arms. अपना है ही प्रवृत्ति All of those ornaments are weapons. तो बाबा अर्थ You belong to the family path. में ब्रह्मा को बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं समझते हैं जो ब्रह्मा के बच्चे Brahma has been portrayed with many arms. बाबा के बच्चे क्या हैं बाबा They think that those arms represent Brahma's children. कुछ नहीं है In fact, there is nothing like Kali, कर दिया just as ऐसे Krishna has been portrayed as dark, so the image of Kali too has been portrayed just as dark. हम अपने को भगवान अथवा Jagdamba is also a Brahmin. कहते We cannot call ourselves a god बच्चे हम or the incarnation. बाबा कहते सिर्फ माम एकम याद Baba says, simply remember me alone. सब कौन है In fact, कौन है all of you are who? ब्राह्मण तो हैं ही You are all Brahmins anyway. Other than that, कुमार हैं you all are साली Shiv Kumars.
and you are saligrams. तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। Then, after you enter your human forms, you become Brahma Kumars and Kumaris. विष्णु कुमार विष्णु कुमारियां बने। Brahma Kumars and Kumaris then become Vishnu Kumars and Kumaris. करनी पड़ती है। The Father creates you, तुम कौन हो? and so He also has to sustain you. डियरेस्ट डैड के तुम वारिस You are the डैड माना heirs of such a dearest dad. वारिस हो। उनसे तुम सौदा करते You are the heirs of such a dearest dad. में दलाल है। You now make a deal with him. बाबा है कौन? This one is just an agent in between. बाबा कौन है? Who is Baba? हाँ, बाबा है होली गवर्नमेंट। Baba is the holy government. वो आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने। He has come to make this government into the Pandava government. We do this highest service. गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं। With Baba's help, we change the people of this government from humans into deities. तो हम कौन हैं? So who are we? वर्ल्ड सर्वेंट। We are their servants. हम बाबा के We are साथ आए हैं। world servants. सारी दुनिया की सर्विस We have come with Baba to serve the whole world. कुछ लेते नहीं। We do not take anything. विनाशी धन महल क्या करेंगे? What would we do with all that perishable wealth and palaces? महल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? We don't need palaces. पैर What do we need? सेवा की। We simply want 3 feet of land to do service. सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। You children are now receiving true knowledge. ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे। That knowledge written in the scriptures भक्ति cannot be called knowledge. ज्ञान That is devotion. माना सत Knowledge means salvation. सतगति माना Salvation means जीवन। liberation and liberation in life. जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए तब तक मुक्त भी नहीं। You cannot receive liberation in life हम जीवन मुक्त होते हैं। until you receive liberation. मुक्त होते You can't receive liberation in life until you receive liberation. हैं। मत तुम We become liberated in life, फिर इस whereas the rest simply receive liberation. This is why it is said, only you know your ways and means. मैं In that case, it proves that God is not omnipresent. सतगति कर He tells you, I come every cycle and grant salvation to everyone आई by giving them my directions. नई दुनिया Liberation too is included with salvation. आगे हम Very few people live in the new world. घट में चांद घट में Previously, we used to say, in this world, में सूर्य there is the sun, moon, and 900,000 stars. जिसका ही इतना विस्तार The sun comes and exists in the world to this time. और लकी स्टार्स Shiva enters this world when there is the expansion of such a large population. थोड़ी संख्या There are Mama, Baba, and you lucky stars in this world. वृद्धि होती The conscious also says that there must definitely be a very small population in the golden age. जितना पवित्र Later expansion takes place. उतनी धारणा All of these things have to be understood. impurity You will be able to imbibe this knowledge to the extent that you become pure. प्योरिटी है When there is impurity, you imbibe less. Purity is first. कभी भूत रह जाता है तो माया से हार You sometimes become defeated by Maya
when there is still the evil spirit of anger in you, that too is a battle. विकारों को निकालने की प्योरिटी फर्स्ट है. Purity is first in order to renounce the vices in Brahmin life. युद्ध है. उस्ताद को पूरा हाथ देना है. You have to put your whole hand नहीं तो into the master's hand. Otherwise, जिनका हाथ है Maya also becomes very powerful. बरसात. The shower of knowledge is for those who have put their hands into his hand. जाते हैं देखते हैं Baba plays his part as the detached observer कि माँ बाप and watches everything. स्टार्स जो अनन्य हैं उनको You are able to understand that you have to follow the father, mother, बताया गया है. and their special children, the lucky stars. समझाते हैं क्या समझाते हैं. मुरली पढ़ना It has been explained that you must never stop studying the Murlis. पहली मुरली So this was the first Murli. की लते बच्चों प्रति Acha, पिता बाप दादा का याद to the sweetest, beloved, long lost, and now found children, love, remembrance, and good morning from the Mother, Father, Bab, Dada. The spiritual father says Namaste to the spiritual children. We spiritual children say Namaste to the spiritual father. 23 दिसंबर. Now we have the night class, 23 December 1958. कितने सेंटर्स रूहानी कारखाने हैं Look how many spiritual factories जहाँ से Almighty Baba has, रूहानी रत्न where everyone receives के सेंटर so many spiritual jewels. रूहानी रत्न मिलते हैं. और बाबा कौन है. Who is the Baba? कारखानों का सेठ. Baba is the master of all the factories. तो बाबा ने कहा मैं हूँ सब कारखानों का सेठ. Even in the outside world, there will be the masters of the factories. Baba is the master of all the factories. दुकानें चल रही His managers look after them and make sure that they are running well. ये तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है. Whether you call them shops or hostels, जीवन बना. they are part of the Brahmin family. जीवन कैसे बनता है. You have to make your life एजुकेशन से. worthy through this इसमें education. जिस्मानी दोनों इकट्ठा है. Here the spiritual दोनों and the physical are both together जिसमें दो and both are unlimited. गुरु लोग शास्त्र आदि की रूहानी That spiritual and physical knowledge are both limited. The spiritual knowledge मनुष्य को that gurus give from the scriptures is also limited. एक सत्य गुरु We do not consider a human being to be a guru. ही रथ में आते हैं. We do not consider a human being to be a guru. Ours is only the one Sadguru याद करेंगे who comes in this one chariot. विक्रम विनाश. Only when you remember him constantly विनाश माना will your sins be absolved. ना. कोई सारे दिन में मिस्टेक्स हो जाती हैं. You will not commit any mistakes. अपसेट हो जाते हैं. मिस्टेक्स. You will become angry, you will become upset, तो बाबा कहते हैं you will create sins. And therefore Baba says, only when you remember him constantly will your sins be absolved. को याद करना है. कोई भी You receive wealth from that grandfather विक्रम and you therefore have to remember him. Never perform actions that are sinful. और यहाँ कर्म. In the golden age, all your actions are neutral, क्योंकि whereas your actions in this world become sinful हम बिल्कुल सेफ हैं. because there are the evil spirits of the five vices in everyone. दान में दे दो. Here we are completely safe. तो नुकसान Baba says,
donate the vices. ऐसे मत समझना। However, if you then take them back, you cause yourself a great loss. पता पड़ जाता है। धर्मराज Do not think that you can commit a sin secretly and that no one will know. Dharamraj comes to know everything. हर एक It is at this time that Baba is called Antaryami. He sees what is in the register of each child. को सब पता चल जाता है। Baba knows what is in each one's register. इसलिए छिपाना He knows what is within all of us children. तो बाबा है। Therefore, करना चाहिए। you mustn't hide anything. ऐसे चिट्ठी लिखते हैं, बाबा हमारे से भूल हो गई। Some even write a letter saying, Baba, I made a mistake. Please forgive me. Do not punish me in the court of Dharamraj. बाबा के नाम पर They write, do not punish me in the court of Dharamraj. चिट्ठी डाल देते हैं। It is as though they are writing directly to Shiv Baba. They address their letter with Baba's name and post it in this post box. यहाँ प्योरिटी By admitting your mistake, your punishment is reduced by half. इतना ऊंच बन रहा है देवता, उसकी क्या बताई धारणा? Here you need to have a great deal of purity. सर्व गुण You are the ones who become deities. संपन्न यहाँ बनना है। It is here that you have to become completely virtuous प्रैक्टिकल पार्ट बजाना, and 16 celestial degrees full. जांच करनी है। Rehearsals बाबा ने बताई take place here and you will play your practical parts there. कोई विकर्म You have to check yourselves to see whether you are committing any sin. बहुत आएंगे, Although many thoughts will come परीक्षा लेगी, and Maya will test you a great deal, you must not be afraid. होंगे। धंधा नहीं चलेगा, There might be a lot of damage. टांग भी टूट जाएगी, Your business might not do well. बीमार भी हो, Perhaps you would even break a leg or fall ill. कुछ भी हो जाए, Nevertheless, क्या नहीं छोड़ना no matter what happens, बाबा का। you must not let go of Baba's hand. You have to remember Baba in your intellect. अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी। Many types of tests will come. पहले पहले बाबा के सामने आती हैं, They have all first come to Baba. पहले पहले बाबा के सामने आती हैं, इसलिए तो बाबा बताते हैं खबरदार रहना, So Baba is therefore able to caution you. बनना है। You have to become strong. You have to become courageous. जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं, इतनी और कहानी मिलती है। Nowhere else do people receive as many holidays as they do in Bharat. परंतु यहाँ There will be so many festivals. However, here we don't even take 1 second holiday श्वासोश्वास because याद Baba says you have to stay in remembrance with every breath. श्वास अमोलक है। Each breath is invaluable. जो वेस्ट करते, So how could you waste it? बताया, जो श्वासोश्वास बाबा को नहीं याद करते, वेस्ट करते, Those who don't remember the Father in every breath, they will जन्म का destroy their status. श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। Every breath of this birth is most valuable. बाबा की सर्विस Day and night, remain engaged in doing Baba's service. तुम ऑल माइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उसके रथ पर, Do you love Almighty Baba or His chariot? शिव बाबा पर आशिक हो या उनके रथ पर, Do you love Shiv Baba or His chariot? Or do you love them both? जरूर दोनों का
आशिक तो होना Surely you have to love both of them. ना। अच्छा पाठ बजाया, Brahma Baba is also playing a very beautiful part. उनको फॉलो करते हैं, शिव बाबा भी We देते हैं, follow him. We also see Shiv Baba. वो इसका रथ है। It would then remain in your intellects that Baba is in this chariot. पर आशिक हुए। You love this one because of that one. शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है। They put a stone bull in the temples to Shiva, इतनी कोई and that too is worshipped. रोज नहीं सुनते These are such deep things. तो कोई कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं। So if you don't listen to these points every day, रोज सुनने you miss out on them. वाली जो रोज मुरली सुनते हैं, Those who listen every day, कभी पॉइंट्स में those who listen to Murli every day, will not fail to give points to others. आएगी तो उत्तर आएगा मन में। बाबा मदद करते हैं ना उस समय, लेकिन साथ में मैनर्स भी अच्छे होंगे। They will have good manners. बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट है। There is a lot of profit in having remembrance of Baba. को याद करें There is a lot of profit in having Baba's remembrance. है और ज्ञान में भी प्रॉफिट है। ज्ञान का सिमरन करना और बाबा को याद करना। You also have to remember Baba's knowledge. You also have to remember Baba. क्या प्रॉफिट है इसमें? You will have a double profit. ये ना पाप कर्म नहीं होगा, There is मिस्टेक्स नहीं होगा, profit in knowledge and there is करेंगे profit in yoga. समाधान मिल जाएगा। You will get a बाबा ने कहा solution to the problem. मोस्ट प्रॉफिट है। The most profit is in कर्म remembering Baba और पद because your sins are absolved with this and you claim a high status. फिर दूसरी बार भी बाबा अच्छा। ने प्यार दिया। गुड नाइट का मीठे मीठे सिकी लगे Again, Baba is giving love and remembrance and good night बाप to the sweetest, beloved, long lost and now found children. गुड Love, remembrance and a good night from the mother, father, Bab Dada. The spiritual father says namaste to the spiritual children. We spiritual children also say namaste to the spiritual father. मुख्य सार पहला श्वासोश्वास बाप को याद Essence for Dharana. Remember the father with every breath. भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। Don't waste even one breath. कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। Never perform such an action that it becomes a sin. दूसरा है उस्ताद के हाथ में हाथ दे, Put your hand in the hand of the master बनना है। and become completely pure. कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार Never be influenced by anger or be defeated by Maya. पहलवान बनना है। Remain very strong. वरदान Blessing. समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति May you be an embodiment of remembrance who judges whether something is wasteful or powerful व्यर्थ और while seated on the seat of a powerful stage. स्वरूप भव। May you be an embodiment of remembrance who judges whether something is wasteful or powerful while seated on the seat of a powerful stage. हर
कार्य करने से पहले The essence of this knowledge is to become an embodiment of remembrance. समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ Before carrying out any task, be seated on the seat of a powerful stage with this blessing कर्म में आओ। and judge whether that action could be wasteful or powerful, and then put that into practice. आदि मध्य After performing that action, तीनों काल check whether all three aspects of the action, its ये beginning, middle, and end, were powerful. हंस आसन है। The seat of a powerful stage is the seat of a swan, निर्णय शक्ति है। and its speciality is the power शक्ति द्वारा to judge. सदा ही मर्यादा With the power of judgment, में आगे your stage will constantly continue to move forward in being Maryada Purushottam, or highest being who follows the highest codes of conduct. लोगों को दूर भगाने का साधन है Slogan: साइलेंस the way to chase away any type of प्रकार के sickness of the mind दूर भगाने is the power of silence. ये है अव्यक्त इशारे। 4 फरवरी का अव्यक्त इशारा पुरुषार्थ के स्पीड को Now we have the करने वाली point to become avyakt. अपनी बीती हुई बातें The main thing that slows down the speed of effort is to think about your own past or the past of others and keep it in your mind. इसलिए Therefore, take a pledge पुरानी बीती हुई that you will never remember the भी विस्मृति past. में नहीं लाएंगे। बीती हुई बातें ऐसे महसूस हों जैसे बहुत पुराने कोई जन्म Let the things of the past feel as if they are a matter of a very old birth, then the speed of your efforts will be fast. स्वमान Now we have the self-respect, स्वमान है। 4th February. मैं सर्व खजानों से भरपूर संपन्न आत्मा हूँ। I am a soul complete and full of all treasures. भरपूर संपन्न आत्मा। I am a soul complete and full of all treasures. संपन्न कैसे बनाए? Churning how to make oneself की निशानियाँ complete full. क्या होंगी? What would be the signs of a complete soul? मैं आत्मा मास्टर While in yoga practice, I am a soul, a master almighty authority. व गुणों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। Rays of all powers and virtues are falling on me. भरपूरता का अनुभव I, the soul, am experiencing से completeness, डोल स्थिति fullness, जा रही due to which I am becoming unshakable, मैं immovable. मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व शक्तियाँ गुणों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। I am a soul, a master almighty authority. Rays of all powers and virtues are falling on me. जल अडोल I, the soul, am experiencing completeness, fullness, due to which I am becoming unshakable and immovable. बाबा कौन है? We heard Baba's version. क्या देता है बाबा? खजाना। Baba gives treasures. राजाओं का राजा। और क्या सिखाता है?
Baba makes us into the King of Kings, विनाशी ज्ञान धन teaches us to perform elevated actions. और मंजिल भी बता दी बाबा ने। Baba मंजिल spoke कौन सी about the है? destination as well. सब संबंध एक से रखना। We have to keep all our relationship with the one. और बाकी संबंध बाबा ने कहा दुख देंगे, ये तो हम सबको अनुभव है। Other relationships will give you sorrow. प्रकार का दुख का अनुभव तो हम सबको ही है। Everybody, we have experienced it. सारे संबंध मेरे से ही जोड़ो। And therefore Baba says, forge all your relationship with me. करना है You have to become King of Kings. और देख And so, what do you have to do? संबंधों का जो Including your own body, हुई है ना अंदर you have to forget your attachment, bodily relationships तो इसके लिए बहुत रियलाइजेशन and remove all bodily attachment. जानना बाबा को कि बाबा है क्या, Recognize Baba as होली who Baba is. Baba is a holy government. He has come to make us into deities. He is making us elevated. We have to convince ourselves in this way. बस वही एक ही है सारे वर्ल्ड में ऐसी आत्मा परमात्मा बाबा शिव बाबा जो मनुष्य को Shiv Baba is the only one who can change the अपनी मंजिल human beings. मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, Baba says, I am your master. उस्ताद के साथ हाथ हाथ माना So you have to टेंशन चेकिंग, hold the hand of the master. बाबा मेरे को क्या सिखा रहा है, You have to have the checking as what Baba is teaching me. हो जाता है ना सारे दिन में। क्रोध का भी भूत भी तो जबरदस्त है, There is the devil of anger. थोड़ा बहुत ऊंचा बोल देंगे, We will be defeated. रिजेक्ट कर देंगे, We will react, reject. संस्कार आ जाते हैं। The old sanskars will enter. याद का मतलब यही है And therefore, remembrance means remember, just as Baba is the Almighty Authority, I am Master Almighty Authority. को दे रहा है सहन शक्ति, Baba is giving us the power. ये हमको Oh, Baba is giving us all powers. करना सीखें। We have to learn how we have to use all the powers throughout the day. स्थिति के आसन में बैठ जाएंगे, We should use the power to judge. कोई मिलने आया है, कोई बोलने आया है, If anybody comes to meet you, मैं मास्टर से if anybody has come to speak to you anything, मीठा बोल you have to किसी को सुख sit on the seat of दे रही हूँ, Master Almighty Authority. स्थिति में बैठेंगे ना Speak sweetly to them. देने वाली स्थिति, दूसरों को You have to sit in the seat of being a bestower, सारा दिन be a master bestower. So throughout the day you should have this in your churning. इतनी होशियारी से बाबा ने सब सिखाया, Baba is a master. तो उसका हाथ Baba very cleverly teaches everything. His hand is always with us. शांति। Om Shanti. आज की क्लासेस इस प्रकार है। Today's classes are detailed. योग होगा 11 से 12 10 to 11 there will be meditation. नितिन 11 to 12. मुंबई के हम सभी का क्लास Brother Nitin from Mumbai 12 से will give 12:30 class. बजे तक योग रहेगा, And after the class there will be meditation. कॉन्फ्रेंस हॉल में ही रहेगा। सभी भाई बहनें ध्यान देंगे। And during the day the classes will be in the conference hall. 10:30 से 11 योग, 11 से 12 क्लास और 12 से 12:30 योग रहेगा। Class and meditation 5 से 6 बजे during the day will be in the 5 से conference 6 hall. बजे तक योग, 5 to 6 meditation in the evening. कराएंगे। 6 to 7 class. मधुबन Brother Ramnath Madhuban will give a class. हम सेवा कैसे करें। How can we do service 7 through से 8 light and might? डायमंड 7 to 8 p.m. there will be yoga in the Diamond Hall. डायमंड हॉल में ही प्रोग्राम चलेगा। In the evening there will be program in the Diamond Hall. डांस प्रस्तुत करेगी और आप सबके लिए चौहान भाई पवार भाई म्यूजिकल एक्सरसाइज कराएंगे। शांतिवन निवासी बीके कॉलोनी ट्रॉमा सेंटर शिव मनी के तीव्र Now there will be a beautiful dance. की मीटिंग And Brother Pawar will also be teaching physical exercise. नंबर 3 में होगी।
शांतिवन निवासी बीके कॉलोनी, शांतिवन निवासी बीके कॉलोनी, शिवमणि नर्सिंग कॉलेज. The meeting of the intense effort making group in the evening training center hall number 3. There will be their meeting in classes. स्टेशन जाने वाले हैं वो अपने ट्रेन के टाइम से 4 घंटा Those who are about to go to the railway station, में पहुंचे। they will reach the transport, ध्यान से डायरेक्शन and 3 hours before you depart you will reach the railway station. क्योंकि Otherwise you will चल रहा है। miss your जो train. भाई बहने रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं वो अपने ट्रेन के टाइम से 4 घंटा पहले शांतिवन ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंचे, क्योंकि आबू रोड में निर्माण कार्य चल रहा है जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। बसों को आने जाने में समय बहुत लग रहा है। एक भाई है जिनकी सोने की चेन खो चुकी है, जिस किसी को मिली है कृपया खोया पाया में जमा करा दे। बाप दादा मिलन के समय एक चश्मा कवर सहित गुम हो चुका है। वैल्यूएबल चश्मा है, इसीलिए जिस किसी को मिला है वो विश्व कल्याणी भवन में दे दे। वर्षा संचेती जिनका आधार कार्ड मिला है कृपया डायमंड हॉल के स्टेज के पीछे आकर ले ले। गुना सुजाना हैदराबाद की आपका पर्स और आधार कार्ड मिला है। मनीषा मधुकर उस्मानाबाद से आपकी पर्स मिली है, कृपया डायमंड हॉल के स्टेज के पीछे आकर ले जाए। कुमारी ऋतुजा से निवेदन है। हम सब जानते हैं कि बाबा के घर में हमें वैरायटी अनुभव सुनने के लिए मिलते हैं, तो आज हम सभी के बीच जर्मन से पधारे हमारे रजनी दीदी जी हैं, जिन्होंने मम्मा बाबा की पालना ली हुई है। तो दीदी जी ने बहुत सुंदर बाबा की मुरली भी हम सब Sister Rajani from Japan, तो जरा सभी she filled our aprons through Baba's Murli. अभिवादन है। So we will all thank her and also welcome her. Now Kumari Rutuja will perform a beautiful dance. Om Shanti. जर्मनी नहीं, आप जापान से पधारे हैं, बहुत बढ़िया। ओम शांति।
बांट लिया, कर लिया अधिकार। जल थल गगन को नाप लिया, कर लिया अधिकार। खुद और खुदा को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। आत्म घर को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, ओ देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। मुक्ति जीवन मुक्ति देने आए हमें किनारा। भारत स्वर्ग बनाने फिर से आए वो हमारा। गीता ज्ञान देके वो श्री कृष्ण बनाए प्यारा। गीता ज्ञान देके वो तुम्हें कृष्ण बनाए प्यारा। बांट रहे अपने बच्चों को वो रूहानी प्यार। दे रहे वरदानों से तुम्हें विश्व का अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, ओ देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। धन्यवाद ऋतुजा। अभी हम सब बाबा को याद करेंगे और पवार भाई हम सबको 15 मिनट के लिए म्यूजिकल एक्सरसाइज कराएंगे। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई। सांसों की माला में
લાગ્યો છે. बहनों की तरफ से एक घड़ी मिली है जो डायमंड हॉल के स्टेज के पीछे आकर ले जाए, उसके बाद खोया पाया विभाग से ले सकते हैं. अगर एक्सरसाइज करना है तो हर बाजू से कम 2 फुट का पेस चाहिए, तो 2 फुट का पेस रख के सब खड़े हो जाए. इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा. दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा. आओ मेरे लाडलो, बच्चे कह के पुकारा. इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा. इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा. खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई. सार मिला जीवन का, जिंदगी मुस्काई. खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई. सार मिला जीवन का, जिंदगी मुस्काई. नैनों में हर पल घूमे बाबा तेरा नजारा. इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा. इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा. इतना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए. बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए. कितना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए. बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए. नाव पुरानी गहरा पानी है बाबा तू ही सहारा. इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा. इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा.
सदा वो रहते हमारे साथ, सदा वो चलते। जिनकी दरस को तरसे दुनिया, रोज हमें वो मिलते। संग सदा वो रहते हमारे साथ, सदा वो चलते। इस जीवन में बाबा मेरे जन्नत को है उतारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो, बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा